बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज से हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे जो पाकिस्तान में कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो वाटर एड है। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि इनका जो बेसिक काम है, बेसिक थीम है काम करने का, वो वाटर के ऊपर है। Water is an international non-governmental organization focused on water, sanitation and hygiene. सबसे ज़्यादा इनका फोकस जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो वॉश के ऊपर है. It was established in 1981 in a response to a UN International Drinking Water decade 1980 to 1981. इसने इंटरनेशनली ये इस्टेब्लिश हुई. इसका मेन थीम जो था वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर था, उसके ऊपर ही काम करते थे. WaterAid Pakistan started its functioning in 2006 in Pakistan and remained focused on tackling the issues of water, sanitation, hygiene that contribute in people's life. इनके गोल हैं कि 3 गोल 1 टीम, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, और इसके ऊपर एक टीम की सूरत में ये मिलकर काम कर रहे हैं. क्लीन वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन एंड गुड हाइजीन helps everyone around the world live happily and healthy lives. Water is creating important linkages between communities and health and good hygiene practices such as hand washing. ये hand washing की जो ट्रेनिंग है या हैंड वॉशिंग की जो कैंपेन्स हैं वो हर साल करते रहते हैं. हैंड वॉशिंग एंड एनकरेजिंग देम टू बिल्ड एंड यूज प्रॉपर टॉयलेट्स. वाटर एड इज़ वर्किंग विद स्कूल्स. हाँ, ये स्कूल के साथ बहुत काम कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियों के स्कूल्स के साथ. यहाँ वो लड़कियों को प्रॉपर हाइजीन की ट्रेनिंग के बारे में आगाह करते हैं. एंड द मीडिया टू स्प्रेड दीज मैसेजेस एज वाइडली एज पॉसिबल. स्ट्रैटेजी क्या है वाटर एड की? Everyone, everywhere. By 2030, WaterAid Pakistan New Country Program strategies set out 5 strategic objectives to be achieved over the next 5 years. WaterAid Country Program Strategy 2016 to 2021 is aligned with WaterAid Global Strategy and its aim of equality, sustainable services integration, and hygiene promotion. सो अगर हम डीप रूटेडली थॉरली इसको जज करें तो इसका जो ताल्लुक है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो हेल्थ सर्विसेज के साथ है. Priorities for 2016 to 2021, the WaterAid Pakistan New Country Program strategy set out 5 strategic objectives to be achieved over the next 5 years. Sustainable wash services. Wash again, बार बार हम अपने कुछ लेक्चर से वॉश के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं. WaterAid creates a condition where the most vulnerable people are able to assess sustainable and disaster resilient wash services, understand the relationship of hygienic behavior with the quality of life, and assume responsibility for sustaining wash initiatives. Improve sector governance. WaterAid actively support all collaborative efforts and mechanisms to strengthen institutional capabilities for delivering inclusive wash services effectively and sustainably. क्रॉस इंटेग्रेटिंग वॉश विद अदर सोशल सेक्टर्स के कैसे दूसरे सेक्टर्स जो हैं वो वॉश की हेल्प कर सकते हैं या इसको प्रमोट कर सकते हैं. वाटर एड प्रोएक्टिवली इंगेज विद अदर सोशल सेक्टर्स relevant to wash such as education, health and nutrition in the ways that help cross integration of approaches for effective programs. और अगर आप इसको अपने कोर्स के हवाले से जज करेंगे तो हम ने पढ़ा था अपने डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर कि आप ऐसे प्रोग्राम्स शुरू कर सकते हैं जहां आप पहले से मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उनको डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी यूटिलाइजेशंस जो है वो बढ़ सके. Improve sector coordination. WaterAid engage meaningfully with stakeholder to help streamline effective program coordination mechanism with the wash sector. So basically जो WaterAid है उसका फोकस जो है वो वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन है. Wash legislation and prioritization. WaterAid provides support to all legislative effort for the recognition of water, sanitation and hygiene as a basic human right. तो आज हमने पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा
जो कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर काम कर रही है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, जो कि वाटर एड थी। थैंक यू वेरी मच।